Let's start. क्या है heading? Stamp out this hate speech manufacturing network. So stamp out this hate speech manufacturing network. Hate speech क्या है? What is hate speech? What is hate speech? Hate माने क्या? What is hate? In Urdu, what do you call hate? नफरत. नफरत. Speech माने भाषण. ठीक है, नफरती भाषण. समझ में आ रहा? नफरती भाषण. Clear? So hate speech is nothing but stamp out this hate speech manufacturing network. देखिए अपन how many of you use Twitter here? How many of you use Twitter? कोई सोशल मीडिया पे कमेंट करे आप कभी? तो पूरे जने एक साथ उड़ी पड़ते आप एंड यू डू नॉट नो कौन कहां से ट्वीट कर रहा. ठीक है, सो स्टैम्प आउट दिस हेट स्पीच. हेट स्पीच माने नफरती भाषण. इस पे एक आपको ग्रुप्स में ऐसे क्वेश्चन आता ही आता. व्हाट इज हेट स्पीच एंड व्हाट आर द प्रोविजंस इन लॉ टू कंट्रोल इट. सो आपको एक 200 वर्ड्स तक आपको याद रहना. ठीक है, लिख सकना आप लोग. सो प्लीज स्टार्ट रीडिंग. प्लीज स्टार्ट द सब हेडिंग. Please read the The subheading. online trawling of the judiciary is a new law, highlighting a sustained and organized campaign of intimidation. Of campaign of intimidation. मीने ऑनलाइन ट्रोलिंग माने एक को पकड़ के इतने ऐसे बातें करना कि भाई आप ट्विटर छोड़ के चले आना, आपको परेशान कर देना. उसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रोलिंग मैसेजेस से. ठीक है, ऑफ द जुडिशरी. पहले क्या करते थे? इंडिविजुअल्स का करते थे. ठीक है, फर्स्ट इट वाज इंडिविजुअल्स को पकड़ के इतना उसको बेइज्जती करते थे, इतना उसको मेंटली टॉर्चर करते थे कि उन्हें पूरे को साइलेंट ही हो जाता था. अब किसकी बारी है? जुडिशरी की बारी. ठीक है, हाईलाइटिंग ए सस्टेन्ड. व्हाट इज ए सस्टेन्ड? सस्टेन्ड मींस कंटिन्यूड. ऑर्गेनाइज्ड माने एक दो नहीं है. ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन माने पूरी की पूरी टोली आके एक साथ एक आदमी के पीछे पड़ रही, एक साथ एक जज के पीछे पड़ रही, एक साथ एक पूरे जुडिशरी के पीछे पड़ रही. उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड. इंटिमिडेशन माने व्हाट इज इंटिमिडेशन? डराना धमकाना. ठीक है, इंटिमिडेशन माने देयर आर टू मीनिंग. वन इज द डराना एंड वन इज द धमकाना. ठीक है, नाउ दिस आर्टिकल इज रिटन बाय whom? Colin Gonsalves. Who is Colin Gonsalves? देखो सबसे पहले आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो कौन है वो देखो पहले. इफ ही इज अ पॉलिटिशियन छोड़ दो, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं. तो प्लीज हु इज दिस पर्सन? who is Colin Gonsalves? Senior advocate. Senior advocate practicing in the Supreme Court of India. The views expressed are personal. So as he is advocate, he will give you the right sense. क्या हो रहा समझ में आया ये? Did you understand the heading? देखिए 50% of the understanding is understanding the heading. Heading समझ में आ गई? Yes, sir. क्या है heading? नफरती भाषण, नफरती ट्रोलिंग. नफरती भाषण से एक साथ लोगों के पीछे पड़ जाना या उन्हें पूरे को साइलेंट हो जाना. ठीक है, तो प्लीज रीड. सो एक एक पैराग्राफ एवरीवन प्लीज. इतने 9 जने 8 o'clock 8 is there are 9 people. I have done my part. I have explained you the heading and subheading. Now first start with Shima and then एक एक के बाद एक कंटिन्यू करिए. Please make your notes. Whatever I am highlighting, please make your notes. Please read. Shima will be your first paragraph. जी. The recent ferocious attack on a judge of the Supreme Court of India by the IT cell of a prominent national political party has given the impression that there are a significant number of people opposed to the
combating judicial criticism of the former national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Nupur Sharma, for her remarks on the prophet. Rather, it may well be that an overwhelming part of all religious communities would feel a sense of pride that a person of his standing would stand up to the tyranny of groups engaging in hate. Engaging in hate speech. क्या दिया हुआ है? The recent ferocious माने एकदम डरा देने वाला अटैक. एकदम क्या है? एकदम पीछे पड़ जाना. Means like dangerous attack on a judge of Supreme Court. On a judge of Supreme Court of India by IT cell माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. जो IT cell माने जो आपको ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो कंट्रोल करते उसको बोलते IT cell of a prominent national political party. किसकी बात कर रहे हैं इधर? Whom we are speaking about? We are speaking about the BJP. ठीक है. Political party has given the impression that there are significant माने the important माने एक large number of people opposed to the scathing माने एकदम तीखा. एकदम क्या है? एकदम तीखा वार judicial criticism of the former national spokesperson of Bharatiya Janata Party, Nupur Sharma, for her remarks on the prophet. So one of the judges gave a scathing remark कि भाई ये इंडिया में जो भी अनरेस्ट है वो एक आदमी की वजह से है, वो एक ही एक आदमी की वजह से वो है नुपुर शर्मा. तो जैसा वो जज बताया उसके बाद में द ऑनलाइन अटैक स्टार्टेड ऑन हिम. ठीक है, ऑन द सोशल मीडिया. ठीक है, उसके बाद में क्या है? प्लीज पढ़िए एक बार फिर से this point. Rather, it may well be that an overwhelming part of all religious communities would feel a sense of pride that a person of his standing would stand up to the tyranny of groups engaging in hate speech. ठीक है. So rather it may well overwhelming part of religious communities that would feel a sense of pride that a person of his standing would stand up to the tyranny. tyranny माने एकदम क्या बोलते हैं? tyranny authoritarian rule of groups engaging in hate speech. As he is a judge of the Supreme Court, he understood and he has stood his ground. He did not retract from his comments. समझ में आया फर्स्ट पैराग्राफ? अंडरस्टूड एवरीवन प्लीज. अजीम, आलिया, पहला पैराग्राफ समझ में आया क्या है? जैनब भाई यस तो यस बोलो, नो तो नो बोलो. आई वांट द आंसर प्लीज. प्लीज डू नॉट बी साइलेंट. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके. So please next, who is reading the next paragraph? Zainab, are you there? Zainab or Alia? Hello, who is reading please? क्या है? Next paragraph क्या है? Pertinent questions. The Overwhelming. criticism delivered. एक second. Overwhelming means Okay. पूरा ऊपर आ जाना. Overwhelming माने हद से ज्यादा हो जाना. ठीक है? हद से ज्यादा ना सर? हद से ज्यादा. Overwhelming माने उससे अपन समझ में नहीं आना क्या होता. A full, for example, if I give a small example, how many of you are foodie here? खाना सालन अच्छा बना या बिरयानी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी तो क्या करते आप? दोनों वाले एक्स्ट्रा खाते. एक्स्ट्रा खा लिया बाद में समझ में नहीं आता क्या होता. ठीक है? How many of you have experienced that? When you take something extra and you after eating it or after consuming it you don't understand what is happening. दिमाग काम नहीं करता थोड़ी देर के वास्ते. उसको बोलते हैं overwhelming, हद से ज्यादा. ठीक है? नेक्स्ट pertinent question. Please continue. Pertinent questions. The criticism delivered from the bench for the first time showed that some judges indeed have a spine and are capable of speaking the truth to power. Please थोड़ा slow. Okay, sir.
फिर से पढ़िए, थोड़ा स्लो पढ़िए। particularly, okay, the पर्टिनेंट, criticism delivered. एक मिनट, पर्टिनेंट माने, पर्टिनेंट माने कोई भी अहमियत की चीज। इम्पोर्टेंट। देखिए, अहमियत, yes. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस, पहली ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोगों को रीडिंग एनालिसिस, रीडिंग आना। सेकंड चीज, जो बेसिक वोकैबुलरी है ना, वो सही होना, ठीक है। थर्ड, आपको करंट अफेयर्स मालूम रहना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अपना? रीडिंग सही होना, प्रोनाउंसिएशन आना आप लोगों को, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होना, और करंट अफेयर्स की नॉलेज तो आती ही आती, ठीक है। प्लीज, पर्टिनेंट माने, व्हाट इज पर्टिनेंट? Important. इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज रीड। The criticism delivered from the bench for the first time showed that some judges indeed have a spine and are capable of speaking the truth to power. माने थोड़े Particularly, जजेस के पास अभी भी हिम्मत है, हिम्मत से अपने जजमेंट्स लिखते और अपनी बात बोलते, किसी से विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ if just a second, now कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? yes, sir. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल? व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल? 123. 124, ठीक है, 124, ठीक है, 124, and the oaths and affirmations are in which schedule? Oaths and affirmations are in which schedule? भाई शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, याद है नहीं है? एक जज कौन सी शपथ लेता? ये जज टेक्स विच शपथ? ये क्या है शपथ? पढ़िए, एक जज कैसी शपथ लेगा, कैसा खत्म खाता उन्हें? प्लीज रीड। Form of oath or affirmation to be made by the judges of the Supreme Court and the Comptroller and Auditor General of India. IAB having been appointed Chief Justice or a Judge of the Supreme Court of India or Comptroller and Auditor General of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge, and judgment perform the duties of my office without fear or favor, मोस्ट affection or ill पढ़िए, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? आई विल परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस विदाउट Fear or फियर और फेवर। तो शेड्यूल जो ओथ है, कौन से शेड्यूल में दिया हुआ है? शेड्यूल नंबर 3। जब आप ये एडिटोरियल पढ़ रहे, व्हेन यू आर रीडिंग दिस एडिटोरियल, व्हाट द जज हैज डन? ही हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज as per the oath Without fear. he has performed his duties without fear or favor। देखिए, आज अगर आप बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं क्या? क्या रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं क्या? इवन इफ यू टेल, पहले दिल में डर होता है कि भाई कल क्या होने वाला है भाई। सो दिस जज हैज, व्हाट दिस जज हैज डन, ही हैज सेड ट्रुथ टू पावर, मींस जो कसम उन्हें खाया था, the oath which he has taken and he has lived up to it।
समझ में आ रहा? विदाउट फियर एंड फेवर, फियर एंड फेवर है या फियर और फेवर है? Fear or favor. फियर और फेवर, बिकॉज दिस माइट कम इन योर एग्जाम. फियर एंड फेवर है या फियर और फेवर है? बोलिए. फियर और फेवर. Favor. ना ही किसी के डर से, ना ही किसी के वास्ते, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पॉन्सिबल है. और इल विल, ना ही किसी के डर से, ना ही किसी के वास्ते, ना ही किसी के अफेक्शन की वजह से, ना ही किसी के इल विल, ना ही दुश्मनी से. एंड आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ. समझ में आ गया? ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर. ठीक है, so please start reading. समझ में आया ये ट्रुथ टू पावर क्या है? You have to connect your editorial with your constitution. Please continue reading. Particularly at this time when government interference with the judiciary is at its height with transfers and supersessions of independent-minded judges, the pungent and fully justified remarks of the judge were like a fresh wind blowing through the country and the judiciary, and boosted the confidence of judges to stand up to executive excesses. उसके बाद Equally executive, sorry, एक important, मिनट. the event executive excesses माने excesses. it's like एग्जीक्यूटिव के ज्यादतियां. एग्जीक्यूटिव के ज्यादतियां. मैंने देखिए पार्लियामेंट में जब भी फुल स्ट्रेंथ आ जाती ना, यही प्रॉब्लम हो जाता. जब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग हो जाती, सब पे हावी होने की कोशिश करती, इवन द जुडिशियरी ऑल्सो. जब गवर्नमेंट स्ट्रांग रहती, गवर्नमेंट वीक रहती, तो जुडिशियरी गवर्नमेंट पे हावी होने की कोशिश करती, एग्जीक्यूटिव पे. तो ये क्या बोलते हैं, दिस इज कैट एंड माउस गेम है. ये शुरू से चल लेते हुए आ रहा. ठीक है, अब ये टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट एकदम बहुत ज्यादा, एग्जीक्यूटिव बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनके मेजॉरिटी है, तो जो चाहे वो करना चाह रही है लोग. अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे हैव टू लिव अप टू देयर ओथ. समझ में आया? अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर. Okay, please read the next paragraph. Someone else tell me the color. कौन पढ़ रहा है next paragraph? From boys, अजीम है उधर? भाई सर जी सर हूँ सर, थोड़ा ड्राइविंग पे हूँ. ओके, फिर कोई दूसरे है? अली, शरीफ, अमानुल्लाह शरीफ. मैं प्लीज स्टार्ट Sir. रीडिंग. मौजम कोई भी है, स्टार्ट करो रीडिंग. Equally important, the events of the past जी, few sir. days चलो राइट, कंटिन्यू करिए. And equally important, the events of the past few days and the sir thoda and the sir expand kariye sir isko. Untrolls as persons who sow discord through inflammatory comments सुनो. on the internet. एक मिनट. Equally past few days and the uncouth माने relentless. The word is Sir, नहीं दिख रहा, uncouth. sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा आप लोगों को? हाँ, अभी दिख रहा सर. देखिए, इधर से अन इधर है, ऊपर क्या है? couth माने relentless, without respite, without any break. That is uncouth trolling of the judges or merciless trolling. समझ में आ रहा? uncouth trolling of the judge. उसके बाद पढ़िए. Of the judge raised very important questions relating to the ever-growing tendency by the government to intimidate the judiciary. माने डराना और धमकाना, intimidate माने. Continue. The questions that arise are: who are these groups that attack democratic-minded individuals who speak out against injustice? माने देखो, पहले क्या होता था, बस एक आध इवेंट है बोल के छोड़ देते थे. अब क्या है, हर जर्रा भी अगर उन लोगों की लाइन नहीं बोले, आप पे हमला कर दे रहे लोग. तो अब क्या है, ये दिस हैज बिकम ए मीनेस, दिस हैज बिकम ए बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया टुडे. ठीक है, नेक्स्ट.
Does the government have an underground network which operates as an arm of the government? And are they financially supported and ideologically encouraged to engage in hate speech? Finally, what should the पढ़ी पढ़ी Finally, what should the judiciary do to stamp out organized hate speech of this kind, whether it be against journalists, political opponents of the government, or the judiciary? So क्या है, does the government have underground network which operates the arm of government? क्या देखिए, ये गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर. Who is the head of the government? Polity classes याद करिए. Everything is connected here. Who is the head of the government in India? Prime Minister. Prime Minister is the head of the government. Now this person, the Pauline Gonsalves, has asked direct question now कि भाई क्या गवर्नमेंट का अंडरग्राउंड नेटवर्क है, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे उन लोगों पे अटैक करो बोल के. एक ग्राउंड के ऊपर है होम मिनिस्टर, पूरे एक साथ मिनिस्टर दिखते हैं आपको. क्या एक अंडरग्राउंड भी नेटवर्क है जो छुपे हुआ है, जैसा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी अगेंस्ट बात करा उस पर अटैक करो बोल के. ही हैज आस्क्ड अ, क्या बोलते हैं, दुखती रख पे हाथ रख दिया है गोंसाल्वेस. ठीक है. और अब जुडिशरी क्या कर सकती? जुडिशरी, ये प्रॉब्लम तो आप मालूम हो गया, प्रॉब्लम एक्नॉलेज कर रहे हैं. अब पहले प्रॉब्लम नहीं है बोलते थे या नजरअंदाज करते थे. अब नजरअंदाज करने का टाइम चले गया. ठीक है, अब नजरअंदाज करने का टाइम चले गया. ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग? नाउ द जुडिशरी हैज टू व्हाट? Yes, sir. जुडिशरी हैज टू व्हाट? क्या करना है? क्या करना है? लास्ट जो क्या क्वेश्चन है लास्ट में? What judiciary has to do? Judiciary has to get the solution now. और ये हेट स्पीच किसके अगेंस्ट हो रहा नॉर्मली? कौन इसका विक्टिम है? Journalists, political opponents of the Assalamualaikum. Assalamualaikum. Please mute. तो द विक्टिम कौन है इधर? जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल अपोनेंट्स एंड द गवर्नमेंट और द जुडिशरी. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ प्लीज रीड. मौजम है उधर? सोनिया है उधर? Yes, sir. Okay, please start reading. Which color do you want? Growth political support. Color, In color, her please. book, Blue, red, blue, dark blue, light blue. dark. Please start. Growth political support. In her book, I Am a Troll, Swati Chaturvedi described internet trolls as persons who saw disorder through Who saw? who sow Discord. through inflammatory comments on the internet. She tracks the growth of his network Not from the early has 2000 and attributes its steps upward curve to the support it received from a senior political leader in government. Right winning. Sir, what is that word? Right wing propaganda. Right wing propaganda. 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 Okay. माने झूठे Okay. सत्य बातें फैलाना. Okay. Website continuously predict hate tweets and slander journalists. They are backed up by coordinating hashtag campaigns where anonymous Twitter handles retweet the same tweet
continuously until trending began. Okay. So Sir, shall we continue? let me explain this first paragraph and then you can continue. ठीक है? Okay. देखिए अब क्या है, in the growth, there is a background voice. What is happening here? देखिए, now growth, political support. There is a person called Swati Chaturvedi describe the internet troll as person who discord through inflammatory. Discord माने क्या? What is the discord? Discord माने क्या बोलते हैं? Discord means very unpleasant noise. Discord means unpleasant noise. अगर आपको एकदम अनप्लेजेंट, जो अपने को एकदम पसंद नहीं आती, उसको बोलते हैं अनप्लेजेंट नॉइज. एंड इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स माने भड़काऊ, आपको आग लगाने के कमेंट्स ऑन द इंटरनेट. शी ट्रेसेस द ग्रोथ ऑफ दिस मैटर फ्रॉम अर्ली 2000. देखिए इंटरनेट कब आया? व्हेन डिड द इंटरनेट कम? इंटरनेट हैज कम इन 2000, अर्ली 2000 टू सपोर्ट रिसीव फ्रॉम सीनियर पॉलिटिकल लीडर एंड गवर्नमेंट. जब इंटरनेट आया तो पहले अपन जब कम्युनिकेशन बिकेम एक्सट्रीमली इजी. नाउ वी आर एबल टू कम्युनिकेट. आप किधर भी बैठने दो, यू आर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, किधर भी रहने दो, you are able to communicate, you are able to get the knowledge. So this is the positive aspect of what you can say of internet. ठीक है, लेकिन this internet has been used by political, ये प्रोपेगेंडा माने झूठ सच सब मिला के ऐसा प्रेजेंट करना कि लोग कंफ्यूज हो जाना. ठीक है, समझ में आ रहा? प्रोपेगेंडा वेबसाइट कॉन्स्टेंटली पेडल हेट स्पीच. व्हाट इज हेट ट्वीट माने क्या बोल रहे हैं आप? व्हाट इज हेट ट्वीट? हेट माने क्या? व्हाट इज हेट? नफरत. नफरत. ट्वीट माने Comment. कमेंट. व्हाट इज ट्वीट? कमेंट. नफरती कमेंट्स. एंड स्लैंडर. स्लैंडर माने गाली गलौच. पहले क्या थी, बातचीत होती थी, पर उसके बाद में क्या है, ताना मारना स्टार्ट हुआ. अब क्या है, डायरेक्टली गाली गलौच पे उतर गए लोग पूरे. ठीक है. स्लैंडर. जर्नलिस्ट, स्पेशली द जर्नलिस्ट, दे आर बैक्ड बाय कोऑर्डिनेट हैशटैग कैंपेन. जब भी आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू यूज द ट्विटर? No, sir. व्हेनेवर यू यूज ट्विटर, तो आपको आप जब भी कमेंट करते हैं उसको एक ट्वीट बोलते हैं. ठीक है. और इंटरनेट जो आप ट्वीट करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? हैशटैग. हैश मालूम है? व्हाट इज हैश? Yes. दिस इज हैशटैग. Hashtag. दिस इज हैशटैग. ठीक है. हैशटैग एडिटोरियल एनालिसिस. हैशटैग एडिटोरियल एनालिसिस. तो कभी भी आप किसी को आप इंफॉर्मेशन देना है तो क्या लिखते हैं? हैशटैग एडिटोरियल एनालिसिस. सबसे पहले सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होना? हैशटैग से. समझ में आ रहा? एनोनिमस. Yes, sir. और इंटरनेट की सबसे बड़ी खासियत क्या है? एनोनिमिटी. व्हाट इज एनोनिमिटी? एनोनिमिटी किसको बोलते हैं? where we don't reveal our identity. देखिए नाम सर. एनोनिमिटी माने बेनामी. क्या? देखिए, यू हैव सीन मी, हाउ मेनी हैव नॉट सीन मी? मेरी क्या सुन रहे आप? सिर्फ आवाज सुन रहे. यू हैव नोन मी. Yes. ठीक है. आप लोगों में यू हैव सीन मी, यू हैव क्या बोलते हैं. लेकिन अगर आप लोग मेरे को नहीं देखे, सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे, कुड यू नो हु एम आई? No. No. नो. तो इंटरनेट की सबसे क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि भाई आदमी को मालूम नहीं होता कौन किधर से ट्वीट कर रहा. कैन यू टेल हु एम आई? कहाँ बैठे हुआ हूं मैं? विल यू एबल टू No. टेल मी? No. मैं किधर दुनिया में किधर भी बैठ के किधर से किसी को भी कांटेक्ट कर सकता हूँ. तो वो इंटरनेट का सबसे बड़ी खासियत है. समझ में आ रहा? Yes, sir. और वो क्या है सबसे बड़ा एडवांटेज? देखिए, वो सबसे बड़ा टूल था. वो टूल को उसको वेपन बना लिए लोग. ठीक है. द टूल हैज बिकम द वेपन. क्लियर? Yes, समझ में आ sir. रहा?
क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए प्लीज कंटिन्यू। और एक चीज क्या है, और एक चीज देखिए, जब भी ट्वीट करते हैं ना, जब भी ट्वीट करते तो आपको क्या लिखना रहता, और अगर आप जब ट्वीट करें फिर आप रिट्वीट उधर बटन रहता, तो ये कंपनी, ये जो पार्टियां हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को लगा दिए ऑटोमेटिक, इतने ज्यादा बार उसको रिट्वीट कर रहे कि वो पूरे को ट्रेंड ही बन जा रहा, और वो ट्रेंड बनने के बाद में एकदम इट हैज बिकम ए न्यूसेंस। समझ में आ रहा? नेक्स्ट प्लीज कंटिन्यू। She gave instant of tweets of Sir broke out. गोरी काउ स्लॉटर, Gory cow slaughter, an imaginary instant of love jihad. इंस्टेंसेस Some ऑफ of लव them जिहाद। ठीक है, नेक्स्ट। Yes. Some of them mock women who face sexual abuse and harassment. They did not spare their own party leaders. Sir, लीडर, scroll down. रोल Party अप। leader. Manika Gandhi, when she set up a helpline called hashtag I am told help. ना देखिए ये क्या हो रहा है इधर, ये लोग देखिए नॉर्मली जब अपन एक मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे हैं, जब एक कोई चीज नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, वो नेगेटिव चीज बढ़ते इतनी बड़ी हो जाती कि अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते लोग। ठीक है, अब मेनका गांधी इज अ लीडर ऑफ बीजेपी इटसेल्फ, सो शी स्टार्टेड ए हैशटैग सेइंग भाई अगर आपको ट्रोल हो रहे, आपको ऑनलाइन तंग कर रहे लोग, तो आप ये उस पे जाके आप अपना क्या बोलते हैं शिकायत लिख सकते। ठीक है, तो जितने भी है फिर उसको ट्रैक करके उसको हेल्प करने के लिए, सो दे आर नॉट लीविंग देयर ओन लीडर्स इटसेल्फ। अगर कुछ भी जर्रा भी लाइन से अलग हटे, आप यू आर ट्रोल्ड, माने ऑनलाइन परेशान करना, ट्रोल माने ऑनलाइन परेशान करना। ठीक है, Yes, sir. प्लीज कंटिन्यू। A Twitter handle from this group engaged in substance abuse of a well-known female broadcast journalist. Another hosted a photoshopped picture of a female actor when she joined the Aam Aadmi Party. One of these networks asked for execution of under trials without due process, saying that the state should not bother to arrest sus- sir, suspects. Should not bother to arrest suspects. But kill in cold blood. पढ़िए। Okay. Any extreme episode was when a Congress spokesperson was threatened with Nirbhaya style raped by trolls. In the concept of pellet blending in Kashmir. पैलेट ब्लाइंडिंग माने रबर के गोलियां रहते। देखिए नॉर्मल Yes, अगर sir. नॉर्मल गोलियां चलाए तो आदमी की मौत हो जाती, लेकिन फॉर सेफ्टी के लिए वो रबर के गोलियां, हार्ड रबर के गोलियां रहते, वो चलाते, तो उससे क्या होता, आंख पे अगर मार लगी तो आंख खत्म हो जाती। ठीक है, मौत नहीं होती, बट इतनी तकलीफ होती कि आंख ही खत्म हो जाती पूरे। Okay. They were trolls who called for mass murder of Kashmirs and the dropping of a bomb on a funeral फ्यूनरल Funeral प्रोसेशन माने लास्ट, position. जब व्हेन द डेथ हैपेंस, जो लेके जाते हैं ना डेड बॉडी को फ्रॉम होम टू द ग्रेवयार्ड, उसको बोलते फ्यूनरल प्रोसेशन। माने ये लोग इतने दे हैव बिकम सो इंसेंसिटिव, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। A Twitter handle from this group engaged in sustainable abuse माने गाली गलौज, abuse means गाली गलौज of well-known female broadcast journalist. Another hosted a Photoshop picture of female. क्या है? This female has joined the Aam Aadmi Party. अब Aam Aadmi Party is the biggest competitor of the presently ruling party. तो कैसा भी करो, उठने नहीं देना किसी को भी।
वन ऑफ दिस नेटवर्क आज द एग्जीक्यूशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। माने देखिए इंडिया में क्या है, रूल ऑफ लॉ है। इंडिया में कौन सा एजम्पशन करते, इनोसेंट until proven guilty। समझे? what do you mean by this, what do you mean by this word sentence, innocent until proven guilty? what do you mean by this? कोई बोल सकता है इसका जवाब? innocent until proven guilty। हेलो, आवाज आ रही? Sir, we don't know, sir. you do not know, that is the जब best तक answer। के जब जब तक के तक के अपना जुर्म प्रूफ नहीं होगा तब तक के अपन बेगुनाह है। जब तक के आप गिल्टी, आप गुनहगार प्रूव नहीं हुए, जब तक के आप गुनहगार प्रूव नहीं हुए, ठीक है, जब तक आप बेगुनाह है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बता दिया, एग्जीक्यूशन ऑफ अंडर ट्रायल्स। अगर आपको अरेस्ट कर लिए तो लोगों को विदाउट ट्रायल के खत्म कर दो, विदाउट ड्यू प्रोसेस, सेइंग दैट स्टेट शुड नॉट बॉदर अबाउट अरेस्ट ऑफ सस्पेक्ट बट किल इन कोल्ड ब्लड, डायरेक्टली उसको खत्म ही कर दो लोगों, ठीक है। एंड वाज थ्रेटन्ड विद निर्भया स्टाइल रेप बाय ट्रोल्स। माने नॉर्मली इट इज अ हीनस क्राइम अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है। प्लीज रीड नेक्स्ट, another person please। but take the initiative and start reading please, don't wait for anyone। When journalist Guru, जी, when journalist Guru Lankesh was killed in Bengaluru in 2000. when the journalist Gauri Lankesh Okay, sir. Was killed in Bengaluru in 2017. A Twitter handle followed by leaders on the party in power tweeted a message that had much profanity, sir. yes profanity, वो पढ़िए, मैं मीनिंग बोलता हूँ। Profanity. Other journalists were also threatened that they are going the Gauri Lankesh way. profanity माने, can anyone say what is the meaning of profanity? एकदम एकदम बेहया लैंग्वेज, उसमें कुछ भी उसमें रेस्पेक्ट नहीं है, एकदम लास्ट, उससे छोटी बात कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेल व्हाट द लैंग्वेज दे हैव यूज्ड, बट इट इज एकदम बेहयाई की लैंग्वेज। समझ में आ रहा? नेक्स्ट। The Wire reported that a network of 757 Twitter accounts was used to mount attack against Mohammad Zubair, co-founder of fact-checking website Alt News. Alt News माने कल एक पढ़े थे, Alt News. Yes, sir. इससे पहले के दिन कल या परसों जुबैर के बारे में पढ़े थे, कल ही पढ़े थे मेरे ख्याल। He was arrested फ्री स्पीच के लिए। He is a journalist, जुबैर is a journalist, फैक्ट चेकर के लिए he has been arrested, ठीक है। तो उसके क्या है, केस चल रहा है इधर। नेक्स्ट पढ़िए फिर। Yes, sir. And the website and that the recovered email ID for the anonymous Twitter handle was that of a youth leader of a party in power. This account revealed sub-accounts which exhibited multi characteristics associated with bot-like and ऑथेंटिक माने फेक, inauthentic behavior, posting more than 500 times a day at all hours of the day. The purpose was to manipulate public participation about the arrested of Mohammad Zubair. Public परसेप्शन। देखो वर्ड समझ में नहीं आया तो आगे मत जाओ, उसको तोड़ के पढ़ो, मीनिंग बदल जाते। Okay, sir. Sir, what is that meaning?
पब्लिक परसेप्शन माने पब्लिक सोचना, आपका व्यू रखना, आपका ओपिनियन बनाने के वास्ते, ठीक है, अगेंस्ट ओपिनियन बनाने के वास्ते, सच्चाई मालूम नहीं होना बोल के, ठीक है। तो ये क्या है, जो बॉट, बॉट माने कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करके और फेक न्यूज पहुंचाना, फेक न्यूज बार बार रिट्वीट करते जाना कि भाई वो ऐसे दिखना के सही है बोल के, ठीक है। So someone else read please next paragraph from boys side. Similar targeting process जी, were managed by TechFog, a sophisticated app used by online operatives to hijack major social media and encrypted messages platform. Over 8 lakh hostile replies were sent out to tweets by women journalists, of which over 5 lakhs were classified offensive. The Wire commented that the handler of TechFog are political aligned, and that is why India political elite are silent. One of the hashtag amplified by this operative reached an audience of around 8 crore users. News Laundry has reported that this will oiled propaganda machine churned out fake videos and mass tweet links to gear up for Twitter storm. माने ये क्या थी, एक टेकफॉग बोल के कंपनी है, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड टेकफॉग। टेकफॉग क्या करती थी, क्या करती है कि भाई ये जो ऑनलाइन है ना, ऐप यूज्ड बाय ऑनलाइन ऑपरेटिव्स टू हाईजैक मेजर सोशल मीडिया एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजेस प्लेटफॉर्म्स। अब आपका देखिए, फॉर एग्जांपल आप यू हैव अ अकाउंट, ठीक है, आप एक फेमस आदमी है, आपके अकाउंट को हैक कर देके, आपके अकाउंट को हैक कर दिए और आपके अकाउंट से ऐसे मैसेजेस जा रहे कि भाई कि आप एकदम क्या बोलते हैं, आपका इमेज खराब होने की वजह से। तो टेकफॉग वाज वन ऑफ द वो कंपनी, कंपनी है, एक कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है, ऑनलाइन ऐप है। टेकफॉग की कंपनी की एक ऑनलाइन ऐप है कि भाई आपके जो भी वो क्या बोलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आदमियां रहते हैं, फेमस आदमियां, उन लोगों का अकाउंट हैक कर लेती, हैक कर लेके ऐसे मैसेजेस भिजाती कि भाई जैसा दिखना कि आप ही भिजा रहे हो, ठीक है, और आप अरेस्ट हो जाते हो। और किसके खिलाफ टारगेट करे थे, और 8 लाख हॉस्टाइल रिप्लाईज फॉर वुमेन जर्नलिस्ट, स्पेशली द वुमेन, ठीक है। सो और नॉर्मली 8 लाख में से 5 लाख गाली गलौज के क्या बोलते हैं ट्वीट से, ठीक है। और हैंडलर्स माने जो ऑपरेट करते वो ट्विटर अकाउंट, उसको बोलते हैं हैंडलर्स। और ये बता रहा कि भाई इसी में जो पॉलिटिशियंस है उन लोग भी इन्वॉल्व है। एलिट माने आला लोग, अमीर लोग, इसलिए वो लोग भी साइलेंट है। समझ में आ रहा? खामोश है, ठीक है, मिली भगत बोलते हैं अपन उर्दू में। नेक्स्ट प्लीज रीड। an attack factory at work. Online abuse has often led to actual violence, as in the case of the attack on a prominent lawyer by person who barged into his office. This is not surprising because, as reported by MS Chaturvedi, office bearers of the party in the power have publicly supported these trolls. माने एक ऐसा हो गया कि वो जो ट्वीट करा ना, उस ही वन ऑफ द पर्सन वाज उसके अकाउंट हैक कर लेके उसके अकाउंट से ट्वीट करे थे, और लोग ये समझे के, और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है उन लोग भी इसको रीट्वीट कर दिए, और लोग ये समझे कि भाई वो सही है, और वो सही समझ के उसके ऑफिस में अटैक कर दिया। उसने प्रोमिनेंट लॉयर बाई पर्सन, लॉयर पे अटैक करे, ठीक है, सही समझ के। नेक्स्ट
The IT cell of the government has seen its activity expand with the induction of many volunteers and paid workers. Miss Chaturvedi has reported that the party in power has created a bank of thousands of dormant Twitter's accounts to be used for synchronized tweeting and storms. The party also has bots creating the party. Hello. As bots Answering is created by the central IT cell. Next. so just a second. Where it is, sir? The Created by party IT also cell. has central IT cell which tweets out identical messages simultaneously so that they look like a real user. These volunteers and employees were given a hit list of mainstream journalists who needed to be constantly attacked. One of the India's most prominent and respected female journalists was attacked in filthy terms and given rape threats. These volunteers and employees use virtual private network to hide the actual location of the user. That is Going the back, anonymity. That is the anonymity. ठीक है, ये क्या हो गया, आईटी सेल के पास ये इन लोगों ने ऐसे एक ऑनलाइन कंप्यूटर स्टार्ट कर दिए, ऑनलाइन कंप्यूटर का ऐसा स्टार्ट कर दिए कि किसी को, और सिंक्रोनाइज माने पूरे एक साथ मिलके, साइमल्टेनियस माने पूरे एक साथ ऐसा क्रिएट कर दे कि भाई जी ऐसा सर। दिखना कि वो एकदम करेक्ट है, और स्पेशली द जर्नलिस्ट आर बीइंग टारगेटेड, और जर्नलिस्ट में भी फीमेल जर्नलिस्ट आर टारगेटेड विद filthy terms and rape threats. ठीक है, और दे आर यूजिंग द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, माने आपको मालूम नहीं होता कि कौन क्या कर रहा. क्लियर? सो प्लीज रीड द लास्ट पैराग्राफ. समवन एल्स जो नहीं पढ़े अभी तक. सकीना है उधर? Aksha, want to read? Sure. Please read. Going back to the incident of Nupur Sharma in the Supreme Court, it is impressive. Sorry. It is imperative that the court understands the country stands with the judiciary. The hate speech tweets are manufactured by a factory of political party that produces millions of hate speeches. A criminal investigation by an independent special investigation team of police is called. Can you please scroll down? Who is called for? No. Can you please scroll down? Yeah. Is called for. Prosecution must follow. This hate speech manufacturing network must be crushed. This is vital for democracy to survive and the judiciary to be intimidated. Judiciary not to be intimidated. Not to be intimidated. Judiciary not to be intimidated. तो समझ में आया? माने क्या है, ये इसको खत्म करना जरूरी है, अदरवाइज अपनी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती. अंडरस्टूड? क्लियर है? तो क्या समझे? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आर्टिकल? एक लाइन में बोलो क्या समझे? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आर्टिकल? ये हेट स्पीच को खत्म करना जो पॉलिटिकल वाले सपोर्ट कर रहे और खास तौर पे फीमेल जर्नलिस्ट को अटैक कर रहे. यस. अली क्या समझे? यू हैव टू रेस्पॉन्ड.